Okay. Hello, students. Very good afternoon to all of you. Welcome to Vedang Ji NEET. I'm your biology educator Prerana. Welcome you all to Vedang Ji NEET. तो केमती अच्छा समझते and how is your preparations going on? पढ़ापढ़ी एग्जाम पाई केमिति चलिछि तमरो बोर्ड पाई प्रिपरेशंस केमती चलछि नीट पाई प्रिपरेशंस केमती चलछि जेमति कि तमने हुए तो जानी ना मु तुमको कहितली लाइव क्लासेस रो शेड्यूल माने टाइमिंग टिके चेंज हेछि तमर जोटा 5टा रे क्लास रहउतला सेटा डेली 4टा रे रहउछि तो तम माने टिके क्लास टाइम रे प्रेजेंट रहि जाओ आउ सेकंड थिंग तमे कहितिलो मते मॉलिक्यूलर बेसिस ऊपर सीरीज जानिया पई जेतु सेटा गोटे इंपोर्टेंट चैप्टर और गोटे चैप्टर रहउछि ता ऊपर वीडियो जानिया कहउतलो मु ता ऊपर वीडियो ऑलरेडी आनिछि तमे जाई कि वेदांग रो जेई नीट रो चैनल रे सर्च करिवो सोनल वेरी गुड आफ्टरनून अरे कौन हेछि गोड़ कौन हेछि तमरो अच्छा कहिथिलो काली नाचु नाचु हेथिलो मु फर्स्ट टाइम सुनुची कि नाचु नाचु पड़ी केमती गोड़ भांगी जाइछि तारो ओके लेट इट तो इकोलॉजी कथा कहउतली इकोलॉजी रो ऑलरेडी हमर 4टा पार्ट रो क्वेश्चंस जाइछि ओके तो आज तारो नेक्स्ट पार्ट ता गुरु बहुत सारा चैप्टर रो ऑलरेडी हमर एमसीक्यू सरीछि ओके तो तुम मैंने जो चेकआउट करिन जाइकी वेदांग रो जे नीट रो चैनल रे टिके चेकआउट करदबो आउ लास्ट थिंग तुम एग्जाम माने तुम बोर्ड होई पारे तुम नीट होई पारे एग्जाम को बहुत ही कम दिन रहिला तो तुम पढ़ा को टिके स्पीड अप करो टिके बूस्ट अप करो निजको आउ कंटिन्यू करो सिलेबस तो कंप्लीट ही जाइथबो रिवीजन को स्पीड अप करो ओके ओके तो स्टार्ट करबा फर्स्ट क्वेश्चन को नहीं की फर्स्ट क्वेश्चन को लेके स्टार्ट करबा फर्स्ट से कहूची फर्स्ट कहूची डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीजेस पॉपुलेशन रो डेंसिटी कथा पचारुची माने सिंपली करिकि से पॉपुलेशन ऊपर पचारुची पॉपुलेशन टा इंक्रीज केमिति हुए इंक्रीज बाय mortality and immigration increases natality and immigration increases mortality increases immigration decreases natality decreases कि immigration कौन हबो बोली पचार देखो पचारिचे से कहा कथा पचारिचे से पॉपुलेशन र डेंसिटी माने इंक्रीज कथा पचारिची इंक्रीज माने जेतेबेले नाटालिटी टा इंक्रीज हे जिवो हला नाटालिटी माने बर्थ रेट का इंक्रीज हे जिवो बर्थ रेट इंक्रीज आउ इमिग्रेशन भी जदी इंक्रीज हे जाउची ताहाले से जगह रे कोन हे परिबो हां बी ऑप्शन बी इज करेक्ट एक्चुअल रे ऑप्शन बी इज करेक्ट काहे कि ना नाटालिटी और इमिग्रेशन जते बळे बढ़िबो सेते बळे पॉपुलेशन रो डेंसिटी बढ़ि जिवो सिंपल हैला नेक्स्ट क्वेश्चन को आसो टोटल नंबर ऑफ आइडेंटिफाइड बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट इन द वर्ल्ड टोटल वर्ल्ड रे केतेडा बायोडायवर्सिटी अछि टोटल वर्ल्ड रे केतेटा हॉटस्पॉट अछि बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट केतेटा अछि टोटल वर्ल्ड रे केतेटा अछि मने रखिबो ताकू केतेटा अछि मने रखिबो हैला नेक्स्ट आसो इंडिया हैज ओनली 2.4% of the world land हैला but its share of the global species diversity केते बोली पचारुची क्वेश्चंस कोन कहिला बुझियला हैला क्वेश्चन रे कहूची इंडिया रे ओनली 2.4 वर्ल्ड रे जेति के लैंड रहउची ता पाखरे इंडिया रे ओनली 2.4% अछि हैला बाकी ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी को एटा केते परसेंट दोछि ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी रे यारो शेयर केते बोली पचारुची लैंड वर्ल्ड अकॉर्डिंग इंडिया रे लैंड हैला एतिकी 2.4% जेतेबेले स्पीसीज डाइवर्सिटी कथा आसुची सेटा इज 8.1% हैला 8.1% हैला गला नेक्स्ट आसो increase in concentration of a toxicant at successive tropic level is called eta direct question कौन हबो
कौन कुहाजिबो ताकू क्वेश्चंस कौन कहला ये कौन सी लैंग्वेज है अमन ये ओडिया है ओडिया ओके तो कौन कहूछ इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए टॉक्सिकेंट एट सक्सेसिव टॉक्सिक लेवल हैला टॉपिक लेवल इज कॉल्ड हैला टॉक्सिकेंट रो कंसंट्रेशन बढ़ुची हैला कहार कंसंट्रेशन बढ़ुची टॉक्सिकेंट रो कंसंट्रेशन बढ़ुची हैला एट सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल गोटे ट्रॉपिक लेवल रु डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल को जाउची जते बळे बढ़ुची ताको आमे कोन कहूचे हाँ accelerated eutrophication no that is eutrophication but not accelerated eutrophication that is cultural eutrophication remember that is cultural eutrophication okay okay next ozone hole is measured in ozone hole is measured in तारो unit पचारुची unit of ozone कौन हबो ओजोन होल रो यूनिट हला डॉप्सन यूनिट ताकू डीयू बोली लिखा जाए दैट इज डॉप्सन यूनिट ओके डॉप्सन यूनिट नेक्स्ट आसो प्लांट रिक्वायरिंग लो लाइट इंटेंसिटी फॉर ऑप्टिमम फोटोसिंथेसिस आर कॉल्ड हैला जेतेबेले फोटोसिंथेसिस टाइम रे प्लांट माने जदी लो अमाउंट रो लाइट रिक्वायर करूचंती से प्रोसेस को कोन कहा जाए से फोटोसिंथेसिस रो प्रोसेस को कोन कहा जाए बोली पचारुची सेटा को कहा जाए स्कियोफाइट्स ओके ताकू कोन कहा जाए स्कियोफाइट्स जो प्लांट्स माने फोटोसिंथेसिस पई लो अमाउंट रो लाइट रिक्वायर करचने ताकू कहा जाउची स्कियोफाइट्स ओके नेक्स्ट आसा पिरामिड ऑफ एनर्जी कथा पचारची बहुत ही इजी क्वेश्चन पिरामिड टर एनर्जी सब बेले केमिति क्वेश्चंस हेथाय अपराइट और इन्वर्टेड कि नॉन ऑफ द अबव कोटा हबो पिरामिड ऑफ एनर्जी अमन 2 पिरामिड ऑफ एनर्जी पचारची इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ एनर्जी इज इन्वर्टेड और अपराइट और मे बी इन्वर्टेड और अपराइट which one inverted or upright बहुत ही इजी जिंस तले किए रुहंती प्रोड्यूसर राइट कंज्यूमर इन द सेंस प्राइमरी सेकेंडरी कंज्यूमर ऊपर रहिले डिकंपोजर it is the structure of pyramid of energy right aman it is always upright okay it is always upright next asa the second trophic level of longer food chain in a lake the second trophic level of longer food chain in a lake is गोटे फूड चेन रे सेकेंड ट्रॉपिक लेवल कोटा गोटे लेक भितर जो फूड चेन देखा एटा हला गोटे लेक रो फूड चेन देखा हला फूड चेन माने लेक रो फूड चेन को तमे इमेजिन कर दियो प्लांट फाइटोप्लैंक्टन जूप्लैंक्टन स्मॉल फिश वीक फिश नहीं जाओ तापर डिकंपोजर बैक्टीरिया नहीं जाओ सेकेंड ट्रॉपिक लेवल रे कौन कहूच सेकेंड ट्रॉपिक लेवल टा कौन हबो बोली पचारुछ नॉट फिशेस रहिले बहुत दूर रे से रहिबो सेकेंड रे जू प्लैंक्टन्स देखो प्लांट जू प्लैंक्टन्स फाइटोप्लैंक्टन्स तापरे स्मॉल फिशेस लार्ज फिशेस डिकंपोजर एटा कोटा that is second trophic level के रहिले second trophic level रे right among zooplanktons that is zooplanktons
Okay. Next, most animals that live in deep oceanic water are जो माने डीप ओसेनिक वाटर रे रुहंती तांको कोन कहू आमे टर्शियरी कंज्यूमर्स डेट्रिवोरस प्राइमरी कंज्यूमर की सेकेंडरी कंज्यूमर कोटा हबो जो माने डीप ओसेनिक वाटर रे रुहंती डीप ओसेनिक वाटर रे को माने रुहंती व्हिच स्टे इन डीप ओसेनिक वाटर टर्शियरी कंज्यूमर प्राइमरी सेकेंडरी की डेट्रिवोरस जेते बेले ओशंस कथा आसीबो सबुठु डीप सरफेस रे कोमान रोचन दोज आर डेट्रिवोर्स हैला दोज आर डेट्रिवोर्स ओके नेक्स्ट आसो राजाजी नेशनल पार्क इज सिचुएटेड ऑन हाँ तमिलनाडु उत्तराखंड आसाम कर्नाटक राजाजी नेशनल पार्क टा कोठी देखा जाए बोली कहूची राजाजी नेशनल पार्क देखा जाए सिचुएटेड इन उत्तराखंड ओके ओके अमन ओके the actively moving organism in aquatic ecosystem is phytoplankton, zooplankton, nekton or benthos which is the actively moving organism in aquatic ecosystem रे active moving organism कोटा पचारुछ that is phytoplankton, zooplankton, nectons or benthos which one that is nekton okay nekton next study the four statement 1 to 4 given below and select the two correct one out of them questions देखा होची I think समस्त को questions देखा होची I think समस्त को एपड़ को पळे आछि मु तुम बेटर देखा हबो देखा होची एपड़ पड़ a lion eating a deer and a sparrow feeding on grains are ecologically similar in being consumers predator starfish Fisester help in maintaining species diversity in some invertebrates. Third coach, predator ultimately lead to the extinction of prey species. Okay, production of chemicals such as nicotine, starchinine by the plants are metabolic disorder. These correct statement या भितरु कोउटा पचरची which is the correct statement बोली पचरुची या भितरु correct statement कोउटा हबो देखो First is the coach lion eating a deer and a sparrow feeding on grains ecologically similar in being consumer. Primary secondary consumer को दी जण सारा ही indicate करूछंती हैला. Third secondary coach predator starfish pasture helps in maintaining species diversity. Right. तो कोटा हैला 1 and 2. 1 and 2. 1 and 2 okay next which is referred to as lungs of the planet earth planet कोटा बोली से कहूच earth planet कोटा बोली कहूच lungs of the planet earth lungs कोटा Satyam and Aman, Western Ghat, Lake Victoria, no. It is Amazon rainforest. Hello? Amazon rainforest. Okay? Next. Which of the following statement is incorrect? Pacharuchi. Which of the following statement is incorrect? Gote padha, then karo. Oceans contain about 71% of total global carbon. Okay, right.
सेकेंड रे कहूची एटमॉस्फेयर कंटेन अबाउट 71%. नो, एटमॉस्फेयर कंटेन अबाउट 71% टोटल कार्बन है 71%. ओसेन्स पाखरे 71% रो ग्रांड कार्बन थाए. ग्रीनलैंड अमन अमन वेट अ मिनिट से कहिची is the question is about lungs of the earth. Which is the lung of earth? Listen, Amazon rainforest consists of large plants and large number of plants. Green, that is green in nature. Okay, that's why there is the oxygen level in the earth is maintained. Okay, that's why it is called the lungs of the earth. Which one? Which one? Aman, which one? Aman, which one you are asking about? You are asking about lungs of the planet Earth, right? No, 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 not Greenland. I am not talking about Greenland. I am talking about Amazon rainforest. Okay, this is different option. This is number 5 option, not this. I am talking about this Amazon rainforest. Okay, okay. Next question. हाँ, the statement is incorrect, right? Incorrect ही पूछा है. Atmosphere contain about 71% of global carbon. तुम्हारे एटमॉस्फेयर में 71% कार्बन है. तुम्हारे एटमॉस्फेयर में 71% कार्बन है. अगर 71% कार्बन है तो कार्बन सबसे ज्यादा हो गया. यस मैम, नाउ आई अंडरस्टूड. ओके ओके ओके. नेक्स्ट, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज नॉट सेफ टू प्रिपेयर कैरी बैग? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज नॉट टू प्रिपेयर कैरी बैग? कोटा कैरी बैग पाई, कैरी बैग प्रिपेयर करिया पाई सेफ नुहे, नॉट सेफ पचारुछि. Cloth is safe. Sorry, safe. Paper is also safe. Jute is also safe. But polythene is not safe. Right, Satyam? Polythene is not safe. Right. Next. Which of the following is not an ex-situ conservation? Ex-situ conservation, which is the following? Questions देखो, not an ex-situ conservation. Cryopreservation is a ex-situ. Seed bank is also a ex-situ. Botanical garden is also ex-situ conservation, but not biosphere reserve. Biosphere reserve is not an ex-situ conservation. Satyam, why are you saying about cryopreservation? Cryopreservation रे -196 degree Celsius रे liquid nitrogen form रे आमे ताकू कौन करू? स्टोर करू. Okay, then why cryopreservation? This will be the biosphere reserve. Okay, next, Kaziranga National Park is famous for. Kaziranga National Park is famous for rhinoceros. Oh, oh. Rhinoceros. Ma'am, how cryopreservation? This answer will not be cryopreservation. Satyam, not cryopreservation. It will be the biosphere reserve. He's asking about, the question is about the not and ex-situ conservation. Not. Mention the not. Right. In cryopreservation, we store pollen at -190 degrees Celsius, 196 degrees Celsius at liquid nitrogen medium. Okay. Next. Okay. Clear. Kaziranga National Park is famous for rhinoceros. Okay. Next, the primary producers of the deep sea hydrothermal vent ecosystem are. Questions बुझी पालो. Primary producers of the deep sea hydrothermal vent ecosystem को कौन कुहा जाए बोली बजा. Deep sea hydrothermal vent ecosystem.
green algae, chemosynthetic bacteria, blue green algae or coral reef? What are the primary producer in deep sea ecosystem or hydrothermal vent ecosystem? Those will be the chemosynthetic bacteria. Why the chemosynthetic? What is the meaning of chemosynthetic? They use chemo. Oh, chemo. They use chemical to perform photosynthesis. Done. That is chemosynthetic bacteria. Okay. Next. Next. Given below is an imaginary pyramid of number. Okay. What could be the one of the possibilities about certain organism at the different level? Okay. Okay. The image is not attached. Okay. Keep this. This given below is an imaginary pyramid now number. What could be the possibilities? Okay. बिना इमेज रे भी हेई परिबो तो कहो से कहूची तळे गोटे इमेजिनरी पिरामिड ऑफ नंबर दिया आइछ हला सेतरे कोन कहूची व्हाट कुड बी द पॉसिबिलिटीज अबाउट सर्टेन ऑर्गेनिज्म एट डिफरेंट लेवल डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल रे कोन देखाई परिबो से कहूची लेवल पीसी हला पीसी माने प्राइमरी कंज्यूमर डोंट कंफ्यूज अबाउट इट दिस इज प्राइमरी consumer is insect and label SC. Question number 19 is very tricky. If you are preparing for NEET, then you have to attend that tricky question, someone. And the second level, secondary consumer. By the way, these are PYQs. Okay. Small insectivorous bird. Okay, PP is the primary producer. I'm writing the full form that you will don't get confused. Phytoplankton in sea and the whale on the, this is tertiary consumer. Label 1 of primary producer is the people tree and the label secondary consumer is the sick. Primary consumer rat and the label secondary consumer is the cat. तो कौन हबो आंसर्स बोली से पचारुची कौन हबो आंसर एथिरे से पचारुची कौन हेई परिबो एटा देखो प्राइमरी कंज्यूमर ता हला इंसेक्ट हला आउ सेकेंडरी कंज्यूमर हला स्मॉल इंसेक्टिवरस बर्ड देखो एठी बनौची प्लांट प्राइमरी कंज्यूमर हला इंसेक्ट एंड सेकेंडरी कंज्यूमर किए कहूची इंसेक्टिवरस बर्ड सेकेंडरी कंज्यूमर हला गला बुझी हला कि नाही कोटा कहिला बुझी हला कि नाही क्लियर नेक्स्ट in a particular climatic condition decomposition rate is slower. Aman, I'm extremely sorry. Okay, it is a ODIA channel. It's an ODIA channel. तो इस चैनल के सारे बच्चे जो भी है वो ओडिया ही समझते हैं. That's why I'm talking on ODIA. बाकी I will try कि तुम लोग भी समझो. I will use English. Okay. In English you will be comfortable, right? I can't completely use English और हिंदी because अभी तो बताया कि इस चैनल के जितने बच्चे सब ओडिया में हैं. ठीक है. And thank you for watching. And जो भी डाउट हो रहा है तुम मुझे पूछ सकते हो वहीं पे पूछ लो. I will. Okay. Okay. Next, in a particular climatic conditions, decomposition rate is slower. Decomposition rate. Why the decomposition rate is slower? Jodi
detritus is rich in water soluble substance. Hala? Yes, ma'am, English. Okay. Done. What is detritus? Detritus. What is detritus? Dead decaying material. When dead decaying organic material is rich in water soluble substance, then the decomposition rate is slower. Okay, next. Temperature increases with height in which of the sphere? Which of the sphere? Temperature increases with height in which of the sphere? Which sphere increases the temperature? Simply put, that will be the stratosphere. Okay, stratosphere. Okay, next. Alexander von Humboldt described for the first time. Alexander von Humboldt कौन describe କରିଥିଲେ ବୋଲି ପଚାରୁଛି कौन describe କରିଥିଲେ? He described the species area relationship. To know the theory about species area relationship, right? Species area relationship described by Alexander von Humboldt. Okay, next. What type of ecological pyramid would be obtained with the following data? Secondary consumer 120 gram, primary consumer 60 gram, producer 10 gram. Wait, I'm making a pyramid for you first. Wait. Okay, primary producers 10 gram. Wait. First we will put the data, then we will make the pyramid. Wait. 10 gram. Okay, primary producer. Primary consumer is the 60 gram. 60 gram and secondary is 120 gram. Getting it or not? बुझी पारुछ कि नहीं? So it is according to weight. If according to weight, that is about biomass. जदि सेटा weight सहित अछि, that is biomass. Weight को हमें केमती मेंशन करूचे? Biomass. Biomass and inverted, that is inverted pyramid of biomass. Weight देखि पारुछ? Reduce ହେଇକି तळु reduce ହେଇକି उपरକୁ increase ହେଇଛି. Okay, inverted pyramid of biomass. Okay, done. Next. A scrubber in the exhaust of a chemical industrial plant remove. A scrubber गोटे इंडस्ट्रियल कौन कहूँ गोटे इंडस्ट्रियल प्लांट रे हैला केमिकल एग्जॉस्ट पाई कौन स्क्रबर टा जो लगी थाए को टाइप रो केमिकल को से रिलीज करे व्हिच टाइप ऑफ केमिकल वो रिलीज करता है व्हिच टाइप ऑफ केमिकल ही रिलीज्ड बोली पचारुची व्हिच टाइप ऑफ केमिकल रिलीज द गैसेस लाइक sulfur dioxide. Okay, that is sulfur dioxide. Next, which one of the following is not a functional unit of an ecosystem? Not a functional unit of an ecosystem. Which is energy flow is the functional unit of an ecosystem. Decomposition is also a functional unit of an ecosystem. हैला क्वेश्चंस देखो नॉट पचारिछ हैला प्रोडक्टिविटी इज आल्सो द फंक्शनल यूनिट ऑफ इकोसिस्टम बट नॉट स्ट्रैटिफिकेशन द आंसर विल बी दिस ओके मेटा लिखौची स्ट्रैटिफिकेशन राइट सत्यम दैट विल बी द स्ट्रैटिफिकेशन ओके सुनो अगर तुम इस चैनल में नया हो तो सब्सक्राइब कर लो और इसका एक टेलीग्राम चैनल भी है
वेदांग जेई नीट करके एक टेलीग्राम चैनल भी है, तो उसमें भी तुम ज्वाइन हो सकते हो। उसमें तुम्हें ये पीडीएफ का लिंक भी जाएगा, ठीक है। आई एम टॉकिंग टू यू अमन एंड सत्यम। अगर तुम्हें पीडीएफ चाहिए इसका क्वेश्चन आंसर वगैरह प्रैक्टिस करने के लिए, तो तुम वो जेई नीट का चैनल है उसमें तुम ज्वाइन हो जाना। उसमें क्वेश्चंस के साथ तुम्हें आंसर भी मिल जाएगा। ओके, तुम्हारे हेल्पफुल होगा इसलिए बोल रही हूँ। नेक्स्ट इन द इक्वेशन व्हाट के डिनोट्स, इन द इक्वेशन व्हाट के डिनोट्स, के क्या डिनोट करता है? के डिनोट द कैरिंग कैपेसिटी, के डिनोट्स द कैरिंग कैपेसिटी इन द रिएक्शन। Last question, last option, last question is from NCERT. Each and every questions are from NCERT. Your NCERT is everything. If you are preparing for board or NEET, your NCERT is everything. So you have to practice from NCERT. Each and every questions are from NCERT. Aman, yes. Live class, daily live class timing is from 4 to 5. 4 to onwards, 4 to 5. Okay. So do join, and if your friends are preparing for NEET or board also, then suggest him. And if you like the questions, the videos, go check out the channel. Okay, go the Vedang J NEET channel and check out other videos. I'm sure you will like it. Not only biology, there is also physics, chemistry, and math. Next, which of the following are most suitable indicators of SO2 pollution in the environment? या भितर कोटा जतबेले एनवायरमेंट रे थिबो से इंडिकेट करैबो कि एनवायरमेंट रे SO2 रो पोल्यूशन लेवल केते अछि बोली। एनवायरमेंट रे SO2 रो पोल्यूशन लेवल केते अछि? That is lichen. Lichen will indicate work as a indicator. Lichen is the most suitable pollution indicator. SO2 pollution indicator. Okay. Next. Branches growing on the back of the whale is an example of branches growing on the back of the whale. Whale तिमी माछर पछपटे जो तमे देखि थाओ एमती लागि जाई थाए ताको तमे ब्रांकल्स तमे तो कहू नथुओ बा 2000 ब्रांकल्स। ओके, तो सेटा जोटा तांको सहित से माने एसोसिएटेड हेई कि थांती ताको हमें कोन कहिबा? That is mutualism, commensalism, parasitism, एमेंसियलिज्म की प्रेडिटिज्म। गोटे सेंस रे या हेई थाए देखो, नो नॉट म्यूचुअलिज्म। क्यों? काहे कि ना से माने दी जण को सहित एसोसिएटेड न थांती, दी जण को बेनिफिटेड करून बेनिफिट दो नाहंती हला। बाकी नेक्स्ट ऑप्शन को देखो, कमेंसियलिज्म, ये तांको पाखरे बस रही थाए। राइट अमन, राइट, कमेंसियलिज्म। ओके, कमेंसियलिज्म। नेक्स्ट आसो, स्पीसीज facing extremely high risk of extinction in the immediate future is called. क्वेश्चन बुझी पारलो जोटा कि बहुत जल्दी कौन हे जीवाकु जाउची? एक्सटेंशन हे जीवाकु जाउची। एक्सटेंशन हे जिबार रिस्क अछि ताको हमें कौन कहि परिबा? ताको हमें कहिबा क्रिटिकली एंडेंजर्ड। राइट एन एग्जांपल इन द कमेंट सेक्शन दर an example of critically endangered species. Write an example. Next, select the incorrect statement. What is the incorrect statement? गोटे पर गोटे पढ़ तापर करिया। Species diversity increases as we move away from the equator towards the pole. Okay. Species diversity increases, not increases. देखो, इक्वेटर जते बेले इठी हला इक्वेटर, इठी रहिला पोल, इठी पोल, तमे जते बेले पोल आड़ को मूव करिवो ना सेते बेले कोन हुए? इक्वेटर टू पोल देछि कि पोल टू इक्वेटर? टुवर्ड्स द पोल। हां, से कोन कोछि? डाइवर्सिटी टा इंक्रीज हे जाय। नो वल्नरेबल माने ऑलरेडी जाइचंती से माने हला। तो से कोन कहूछि? तो से एटी कोन कहूछि देखो, स्पीसीज डाइवर्सिटी इंक्रीजेस as we move away from equator towards the pole. एठी कोन होछि?
अधिका अमाउंट रो ए जगह रे स्पेसीज डाइवर्सिटी देखा होची जेतेबेले कम बढ़ी माने पोल आड़ को जीवो ना सेतेबेले इंक्रीज नुहे डिक्रीज हे जीवो ओके नो नो नॉट 2 that will not increase that will decrease okay next aso okay okay that's all for today that's all for today ma'am please english okay 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 sorry english okay so I already attached the answer sheet if you have to check the answer sheet but after practicing खुद करना है पहले फिर उसके बाद आंसर शीट चेक करना है and if you have any doubt you can ask me in the comment section okay okay तो आज ପାଇଁ ଏତିକି ପୁଣି ଦେଖା ହବ ତମ ସହିତ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ ରେ keep watching ଆଉ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇब करना do subscribe like ଆଉ ପୁଣି ଦେଖା ହବ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ ରେ and ତମ ଲାଇଭ କ୍ଲାସ ର ଟାଇମିଂ ରହୁଛି 4 to 5 okay thank you